एक्ने का कॉमन कॉज क्या होता है? कॉजेज अलग अलग एज के अलग कॉजेज हो सकते हैं. Adult acne is again a very different and a very complex condition. Most of the times it begins as a blackhead or a whitehead. Okay. जिससे फिर बड़ा एक्ने बनता है. आजकल जो बहुत ज़्यादा देखने मिलता है is the bad lifestyle. So diet and lifestyle play a huge role, but that cannot be the only treatment. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्ने स्टार स्किन प्रोजेक्ट. मेरा नाम है श्रद्धा शिंदे और आज हम एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे. एक्ने और इसके पीछे की साइंस, इसके कॉजेस क्या है, ये क्यों होते हैं और इसे ट्रीट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है. तो आज हमारे साथ है हमारी सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जल्फा जानी, who has 20+ years of experience. So आज ये हमारे साथ ढेर सारी बातें करेंगी about acne and acne problems. So we're going to get started. Hello doctor, how are you doing today? I'm good, Shraddha. Thank you for having me here. How are you doing? I am actually excited because this is that one topic, acne, Right. जो मुझे और मेरी बहुत सारी दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है. So I'm super excited कि today we're going to talk more about it. Sure. एंड मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि मेरी कई सारी ऐसी दोस्त हैं जिनकी फेस क्रिस्टल क्लियर है, इट्स सो क्लियर, एंड देन देयर आर पीपल लाइक मी, आई एम श्योर सम ऑफ आवर व्यूअर्स एज वेल, कि थोड़ा कुछ हो जाए तो देयर इज अ सडन एक्ने आउटब्रेक. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि जेनेटिक्स क्या एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन एनी एक्ने प्रोन स्किन? Shraddha, actually genetics not directly, but हाँ there is some chance that अगर आपके दोनों पेरेंट्स या दोनों में से एक पेरेंट को सीवियर एक्ने था, यू आर डेफिनेटली मोर प्रोन, आप ज़्यादा चांसेस हैं आपके एक्ने ब्रेकआउट्स के. ऑल्सो अगर आपके पेरेंट्स को एक्ने था तो देर इज़ अ चांस कि आपका एक्ने भी लंबा चलेगा, शायद हीलिंग को लंबा टाइम लगेगा एंड यू विल नीड ट्रीटमेंट. ओके, सो आई थिंक मुझे जाके देखना पड़ेगा, मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा कि हु हैज़ दिस प्रॉब्लम. विद दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि एक्ने का कॉमन कॉज क्या होता है, बिकॉज एंड यू यूजुअली सी कि एक एक्ने आ जाता है एंड सडनली इन नेक्स्ट फ्यू डेज देयर इज अ ह्यूज ब्रेकआउट. सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस एक्ने एंड द ब्रेकआउट? सो एक्ने इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन. एक्ने के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. एक्ने के बहुत सारे like acne can be different types also. Causes अलग अलग एज के अलग causes हो सकते हैं. So let's begin with the basics. I think age related जो teenage acne है, everybody knows about it. Almost normal consider किया जाता है उस चीज़ को, जैसे teenage में acne होता ही है. Other condition is premenstrual, जैसे women get before the period एक दो acne आना, that's also almost considered normal. Pregnancy, some women break out, some don't. Adult acne is also a known condition. So हर stage पे the reason can be different. For example, teenage acne is more due to the hormonal changes जो teenage puberty के time पे हो रहे हैं. Like in males it is जो male hormone और androgen होता है उसकी वजह से the oil secretion is more, which is why actually males में ज़्यादा common है acne, teenage acne होना. लड़कियों में they go through a lot of hormonal imbalance during that time, which also can lead to breakouts. Premenstrual breakout जो normal menstrual cycle है उसमें premenstrual जो hormonal changes होते हैं उससे भी oil secretion बढ़ता है temporarily, and hence a lot of women get 1 or 2 acne when they are just about to get the period. Pregnancy के दौरान again the hormonal changes can bring you acne. Adult acne is again a very different and a very complex condition. उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके डिटेल हिस्ट्री देकर आप जान पाओगे कि आपको क्या रीज़न है यू आर गेटिंग एक्ने. Right. So I was actually going to come to hormones, but now that you've put some light on it, मुझे आपसे जानना है कि stress and cortisol levels ये कैसे impact करते हैं in development of acne? सो स्ट्रेस अगेन बेसिकली स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिजोल का सिक्रीशन बढ़ता है. दैट्स द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. कॉर्टिजोल आपकी बॉडी पे मेल हार्मोन की तरह काम करता है. सो व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रेसफुल फेज एंड देयर इज़ अ कॉर्टिजोल इंक्रीज, द ऑयल सिक्रीशन इंक्रीजेस. ऑयल सिक्रीशन जब इंक्रीज होता है तो ब्लॉकेज हो सकता है जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो सकते हैं, एंड इवेंचुअली ऑफ कोर्स द बिगर पिंपल्स आल्सो कैन हैपन.
Right, wonderful. With that, you have mentioned different stages of acne, so I'm sure कि बहुत सारे acne के types भी है, Right. and I'm absolutely sure that हर एक का treatment अलग अलग भी है. So would you want to put some light on different kinds of acne और उनके अलग अलग treatments क्या है? So acne के different stages होते हैं. First stage being a blackhead or a whitehead. We call it grade 1 acne. Acne का main reason होता है जो oil gland का duct है या pore है उसका block होना. So when that happens, या तो blackhead बनता है या whitehead. The second stage is जब ये blockage की वजह से oil gland में infection बढ़ता है, bacteria grow होते हैं, जिसकी वजह से फिर red और painful pimples, sometimes pus-filled pimples, या जिसको बोलते हैं cystic acne, which is like the biggest form of acne, वो बनते हैं. That's basically because of bacterial infection of the gland. तो ये सारे stages होते हैं. These are the different types of acne. ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स क्या प्रिडोमिनेंट है फेस पर, जैसे ज़्यादा अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है तो दी एप्लीकेशंस एंड द प्रोडक्ट्स जो आप चूज़ करोगे वो स्लाइटली अलग होंगे कंपेयर टू सिस्टिक एक्ने या पस्चुलर एक्ने जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ है. उसके लिए थोड़े से प्रोडक्ट सिलेक्शन वुड बी डिफरेंट. Okay, so there's so much to acne, then There's a lot to acne. So doctor, I have a very important question जो I'm sure कि हमारी viewers को भी जानना है. ये जो एक्ने है इसका कॉज क्या है? एंड समटाइम्स क्या होता है, आई गेट वन पिंपल, वन एक्ने, एंड सडनली आफ्टर अ फ्यू डेज देयर इज अ ह्यूज ब्रेकआउट. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक्ने का प्राइमरी कॉज क्या है और ब्रेकआउट्स का कॉज क्या है. एक्ने का सबसे प्राइमरी कॉज है ऑयल सिक्रीशन. द ऑयल ग्लैंड से जब ऑयल बहुत ज़्यादा बनता है उससे ही उसका डक्ट जो है या पोर है वो ब्लॉक हो जाता है. एंड दैट इज़ वाई दैट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्ने जो आपको विजिबली ब्लैक हेड या वाइट हेड की तरह दिखेगा. राइट. जब ये लंबे टाइम तक स्किन पे अगर रहा देन अंदर जो ग्लैंड है उसमें बैक्टीरिया बनने लगते हैं और दे ग्रो, जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन होता है, विच इज़ व्हेन द बिगर पिंपल और द रेड lesion or the pustule जो So pus it's से after बना you है. overlook the whiteheads and the blackheads. Yes. It happens Most of the then. times it begins as a blackhead or a whitehead. Okay. जिससे फिर बड़ा एक्ने बनता है which can be a pustule. अगर और भी उसको इग्नोर किया जाए या ट्रीट ना किया जाए, that's when it becomes what we call as a cystic acne. जो Right. सबसे it's very big and it looks really horrible on the face. I know, ask me about it. I've seen it all. Well, with that, so I started getting acne when I was around say 20. बट मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको when they hit puberty, I think it was around say 14, 15, 16 years, they started getting acne. And then sometimes I have friends who had no acne at all and suddenly in their adulthood they started getting acne. So मुझे ये जानना है कि क्या hormones का इसमें कोई role है and how does it work? So oil secretion actually is governed by hormones. So हाँ, Okay. hormones play a huge role in terms of oil secretion and acne. हाँ ये है कि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे इट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ causing acne. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स डिस्कस टीनेज, राइट. टीनेज में एक्ने इज सो कॉमन दैट इट्स ऑलमोस्ट कंसिडर्ड नॉर्मल. ऑलमोस्ट हर टीनेजर को कभी ना कभी एक्ने. But is it normal for real? It is quite normal. In fact, when a teenager would come to me, I usually don't jump into बहुत सारे oral medications या बहुत सारे treatments because उनको जो ज़रूरत है वो एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है. हाँ, सर्टन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विच हेल्प स्किन एक्सफोलिएशन जिससे वो ब्लॉकेजेस बंद हो जाए और एक्ने अपने आप ठीक होने लगता है. अदर कॉजेज इन टीनेजर्स ऑफ कोर्स आजकल जो बहुत ज़्यादा देखने मिलता है इज़ द बैड लाइफस्टाइल. They don't sleep well, they don't eat well, so उसकी वजह से भी acne complicate होता है. But otherwise, the hormonal changes in teenage is what increases the oil secretion, and उसकी वजह से blackheads, whiteheads are pretty much considered normal on a teenager. Right, but I think there are some teenagers also that don't develop acne at all. Right, अगर skin oily नहीं है ज़्यादा या oil glands उतने active नहीं है, plus अगर lifestyle सही है जैसे उनका diet, overall sleep habits, everything is good, then chances of acne is less. So you get it, guys. Get a good lifestyle for yourself. Okay, wonderful. So that's in the teenage. Then, say middle age or once the periods get regular in girls, pre-period acne is also a known thing. Almost all women will get एक दो acne जिसके बाद period start होते हैं. That is also actually a part of normal hormonal changes जो menstrual cycle के दौरान होते हैं. जो period आने वाला होता है उससे just पहले जो changes होते हैं,
that actually stimulates the oil glands और उसकी वजह से एक तो acne आना is considered normal. But doctor, here when it comes to periods also, ये मैंने खुद में observe किया है कि there are months जब मुझे acne आते हैं during periods, and then there are months जब मुझे नहीं आते हैं. So how does it work here? Honestly, that acne is pretty much a physiological thing. So Okay. ऐसा नहीं है कि आप कुछ treatment, say for example oral medicines लोगे या कुछ लगाओगे तो next period you will not get it. It's the internal change that happens during that cycle जिससे pimples या acne stimulate होते हैं. उसको रोकना is pretty much not, you can't be sure कि हम ये करेंगे तो वो नहीं आएगा. आ सकता है हमेशा अगर किसी को What about good tendency है. lifestyle that you mentioned? Yeah, so the other things that you do will help. So Okay. अगर आपका स्किन केयर रूटीन सही है, अगर आपका डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल्स आर अंडर कंट्रोल, then the chances of acne breakout even pre-period becomes lesser. Okay. And what about the pregnancy that you were mentioning? Again same thing, pregnancy में जो hormonal changes हैं वो stimulate करते हैं acne, and that's one time जब आप ज़्यादा oral medicines वगैरह भी नहीं ले सकते, certain applications also you cannot be doing. So then it's more about skin care, certain medications which are okay to do in pregnancy, and a lifestyle. Okay. I want to put some light on stress also, because आजकल बहुत सारा work pressure है, people are stressing a lot because of different reasons. So can you develop acne because of stress as well? Stress increases the levels of a hormone called as cortisol in the body, which has male hormone kind of action, and उसकी वजह से again the oil secretion increases and you can get acne because of stress. Oh wow. So stop stressing, guys. Like your face will be filled with acne if you stress. So if you want a clear face, just stop stressing. Well, that's not something that's in everybody's control. Right. So what is in our control is stressful phase अगर है, उस वक्त you have to make sure you're eating well, you're exercising, you're taking care of your skin. Okay. And that goes a long way in reducing the stress-induced acne. So again, it I think boils down to having a good lifestyle. Yes. Yes. Okay, with that, I want to understand what are different types of acne. And I'm sure कि अगर अलग-अलग type के acne है तो अलग-अलग type के treatments भी रहेंगे. So would you want to put some light on that? Different types of acne. एक हो गया जो हमने age related या जैसे teenage acne, adult acne. अगर the way the acne looks उस हिसाब से देखने जाएं तो blackheads, whiteheads is the first stage of acne. Then some people have tiny red. You know what? I'm so sorry to cut you off like this, but blackhead and whitehead, that is the first stage of acne. Yes. This is something which I didn't know, and I felt it is very normal. It has been so normalized in the households. It's just a whitehead or a blackhead. Some blackheads, whiteheads is known or it's considered normal, but if your face is filled with blackheads and whiteheads, that actually means that you are prone to acne, and then most of them will become bigger acne eventually if not taken care of. So blackheads, whiteheads is the first stage and one type of acne. There are some people who just get blackheads and whiteheads and never ever progress into getting the bigger acne. Okay. Then there are some people who will get these red tiny boils. Kabhi sirf red bumps या red bumps with pus in it. Okay. Could it be a combo also? Because Combo that's something also. which I get. Yes. I think a Yes, combo yes, of both. Yes. And then some who have only cystic acne. Cystic Okay. acne is the big, painful, really inflamed acne. The difference is, so of course you need to start treating from the first stage itself. अगर आप पहले से treatment start कर दोगे तो you will not probably progress. But yeah, cystic acne can be really severe. Right. And does this happen, because I'm speaking from personal experience, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि you're always prone to maybe the regular acne? I mean, I don't know the technical terms, but a regular acne, but अचानक से out of nowhere, maybe when you are like 28, 29, and suddenly you develop cystic acne? Because that has happened with me. Of course, ऐसा हो सकता है. So at that time, it's important कि हम analyze करें कि why suddenly. Nothing will happen without a reason. There has to be a reason. The reason, if you're saying at 28, 29, could be hormonal. Okay. Could be stress induced. There are many other reasons for acne, जैसे some medications. Like if you're on some medications for any other reason, any other medical illness, some medications are known to give acne. Right. Then certain applications. You could unknowingly be doing some applications or I could be product doing that. usage A lot of which it, is yes. not suiting your skin, जो आपके pores को block कर रहा है and Right. शायद उस वजह से acne हो रहा है. It can be diet.
It can be a bad diet. It can be, yeah. If a lot of Yes. junk, high sugar intake, these are things which are known to give acne. So suddenly if at 27, 28 you're getting acne, then there has to be a reason, and it's important that you find that reason out. So you can get any acne at any point. Any point in time. Okay. With that, there are two terms which I always hear. It's inflammatory and non-inflammatory acne. तो इन दोनों में difference क्या है? Non-inflammatory is the blackheads and whiteheads. The minute there is redness, there's a little pain, there's pus, it's inflammatory. So basically, जब bacteria grow होने लगते हैं, that's when it's called inflammatory. Okay. When the bacteria starts growing. Right. So In the before that, so would you say कि before that it's not harmful? No, so if you leave the blackhead, whitehead untreated, or Okay. you do not exfoliate your skin, or you do not get them removed, that's when they will progress eventually toward inflammatory acne. Okay. Okay. So the takeaway here would be maybe just start treating them when Early they are on. in the initial phase. Okay, with that, my mom, she always keeps telling me, जब भी मुझे acne आते हैं, her only advice is कि घर पे बैठ जाओ, अच्छा खाना खाओ, सो जाओ, get good sleep and get into this good lifestyle mode. और मैंने ये try भी किया है in fact, because मैं परेशान हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी की सुन लेते हैं. Let me And just somewhere it try works, this. right? It did work to some extent, I would say, but acne tha, it did not go anywhere. So, and it's very difficult for me to explain my mom, you know, I have to get a professional treatment now. Yeah, maybe some people my age also. So, why do you think people should trust science and research-based solutions in the treatment of acne? See, I think what your mom says or what she meant is pretty much similar to what I have been saying. So, diet and lifestyle play a huge role, but that cannot be the only treatment. Because जो शायद जब उनके generation में या few years ago, lifestyle was very different, the environment was very different, stress levels, the kind of food we eat, everything was very different. उस वक्त शायद इन चीज़ों से कंट्रोल में चीज़ें आ जाती थी. Now it's a little difficult because there are many other factors that actually lead to acne. Of course, so not going out means basically avoiding a lot of dust or pollution on your skin. So that helps to some extent. Eating well, exercising helps to regulate the hormones and hence it helps acne. But the other causes need to be ruled out, जैसे product usage. Now in the present era, product usage is like everybody's using at least 4 products in the morning, 10 products at night. Right. So we need to figure out what's causing. It's like you're describing me. Okay. Yeah, so that's something which everybody comes to you with like a right. list of products they are using. So you need to deep dive into those also. You need to understand the overall lifestyle. You need to first find out what is causing it and then treat, and hence the need for an expert advice. Right. That's great. And any one advice that you want to leave our viewers with? So treat early. Definitely seek professional help when you have acne. Diet and lifestyle play a huge role. And yeah, that's it. I think these are the main things that one should consider. Well, thank you so much, doctor. And it was a wonderful conversation. I think आज मैंने बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जानी about acne. And it was great to have you with us. Thank you. Same here. Thank you. तो आज हमें पता चला कि एक्ने सिर्फ एक सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है. इसमें हार्मोन्स, बैक्टीरिया, सीबम प्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं. वेल सिर्फ होम रेमेडीज और वायरल हैक्स से काम नहीं चलेगा. देयर हैज टू बी साइंस बैक्ड सॉल्यूशंस. और अगर आप इसके पीछे का साइंस समझोगे तब भी यू विल रियलाइज दैट योर स्किन इज डिफरेंट और हर स्किन की नीड जो होती है वो भी डिफरेंट होती है. Well, I'm sure that this episode has resonated with each one of you out there. तो चलिए मिलते हैं हमारे next episode में जहाँ पर हम बात करेंगे about skin, trigger points and seasonal acne. So stay tuned.